तो लो भाई, फिर से मैंने कबाड़ जुगाड़ कर लिया है। मेरे घर में जितने भी आलतू फालतू सामान है सभी को लगता है कि कबाड़ है, लेकिन मेरे लिए ये सोना है। दोस्तों, चीज़ें पुरानी होती हैं लेकिन वो बेकार कभी नहीं होती है, क्योंकि आप इससे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से कुछ भी ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। और ये आपको एंड में पता चल ही जाएगा कि मैं क्या ट्राई कर रही हूँ। लेकिन आपको इस तरह की बेकार चीज़ों का DIY या फिर क्यूट क्यूट कुछ भी पसंद है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और इस बल्ब से और भी बहुत सारे DIY बन सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि इससे मैं क्या ट्राई करूँ। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में लाइक कमेंट शेयर भी करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेने होंगे इस तरह के LED बल्ब जो कि ख़राब हो चुके हैं, और मैंने देखो कितने सारे इकट्ठे करके रखे हैं। और साथ में ये क्ले जो कि मोल्डेड क्ले हैं, आप चाहो तो एमसिल का भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्ले के दोनों पार्ट को निकाल के हम मिक्स करेंगे। आप टेल्कम पाउडर भी रखना, इससे आपके हाथों में ये नहीं लगेंगे। तो ये देखो ये मिक्स हो गया, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने बल्ब पे एक फीचर्स भी बनाई है जो कि वो पार्ट डिलीट हो गया, तो आप इसे देख के भी अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन अगर आप इस तरह से मार्किंग कर लोगे तो आपको बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वैसे वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है, जिससे आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो आगे आप वीडियो को देखो, एंजॉय करो, तब तक मैं इसे पूरा करके आती हूँ।
तो लो भाई, ये भी बन गया और ये है सांता क्लॉज। जैसे कि आप देख के बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन मैं भी बता दे रही हूँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कलर भरना, क्योंकि कलर के बिना जिंदगी क्या, ये छोटी छोटी क्राफ्ट भी अधूरी लगती है। और अगर आप इसमें कलर भरते हो तो सबसे सुंदर लगने लगता है। तो चलो उसे भी देख लेते हैं।